Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now look at this question. What is said in here? There is a straight current carrying wire that we are given and this wire has current I directed into the plane of figure. Into the plane of figure कहने का मतलब देखो यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉन है. लेट्स से ये डायग्राम तुम्हारा XY प्लेन में है. In that case, wire is kept along the Z axis and direction of current flowing through it is basically along minus Z axis. So current के direction के लिए minus Z cap आप बता सकते हो where Z cap is unit vector along the Z axis. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन. ऐसे भी इनटू द प्लेन आउट ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द दिस थिंग, दिस स्क्रीन, then you can say that line that is coming towards you is basically outward out of the plane, so that is indicated by dot, and the line that is going away from you and into the screen is basically your line going into the plane, and that is indicated by cross. So कुछ ऐसा है. Now there is a line AB of length 2a at a distance a from the wire. So there is a line AB, it is at a distance a from the wire, done it? And you can clearly see here this line AB is symmetrically divided along this line. Let's say this is x-axis. So along x-axis, it is symmetrically divided क्योंकि x-axis से above आप check करो, this is of a length, below it is of a length. So it is like that. And then we have to calculate B dot dl at each point, and then we need to integrate. I mean, at each point we need to calculate, then we need to sum it, not integrate. I mean, we will add all these B dot dl, then we will get the B dot dl ka integral, right? Integral meaning what? Summation. So if we have to calculate a say b tak integral of b dot dl, it means what? It means at each point you have to talk about b dl cos theta, and then you have to add all this. That is integration basically, right? So you have to add this. Now this is a very tricky one because each point पे magnetic field हमें नहीं पता, it will be variable, right? And it is not possible actually to calculate magnetic field at each point, then look for theta at each point, then dl, and then do it manually and then add all this in order to get the answer. So we need to bring in integration over here, and we will try to do what? We will try to write b dl cos theta for any small section, and then we will try to integrate it in order to get b dot dl starting from a to b. Okay, so that we will do, but let's see how we will do that. फर्स्ट पोर्शन में हमें ये निकालना है. सेकेंड पोर्शन में क्या कह रहा है? Will the value of integral, the one you are calculating, will change if a is changed such that length of line AB is always double that of A. So everything is changing proportionately. A को हमने suppose 2A किया, then it is said that ये 2A हो जाता है, ये 2A हो जाता है. In that case, will the integral B dot dl change? So वो depend करेगा इस चीज पे कि जब आप B dot dl A to B निकालते हो, तो जो value आता है, how it is getting, I mean how it is dependent on a factor. If it is independent तो फर्क नहीं पड़ेगा. If it is dependent somehow, then also we need to look at the expression carefully कि a को 2a करने से changes क्या आएंगे. ठीक है. So that answer will be finally revealed by the expression that you will be getting for this one. तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए. अब देखो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, उससे भी पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है. सपोज कर लो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है. सिंस हियर इन दिस क्वेश्चन नथिंग इज गेटिंग talked about the finiteness or infiniteness of this wire, it means what we are going to take is we are going to talk about infinite wire, infinite current carrying wire. ठीक है. सो अगर हमारे पास देखो ऐसा कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोफाइल क्या होता है? Let's say this wire is along the z axis or is along the y axis, let's say. Then because of this current, magnetic field will be circular, right hand thumb rule use करोगे, right hand का thumb current के direction में place करो, curl your fingers, curling will give you the direction of magnetic field that is getting curled along anti-clockwise direction. So सर्कल कुछ ऐसा बनाओगे. सपोज कर लो मुझे यहाँ से कुछ इतने डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग. सो इफ यू सी हियर आर डिस्टेंस पर अगर चेक करना है तो आर रेडियस का आप एक सर्कल बनाओ. सो दिस इज द सर्कल. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द प्लेन ऑफ दिस सर्कल, इन विच प्लेन इज दिस सर्कल लाइंग? This wire is along the y-axis and your thumb is along the y-axis, and if you curl your finger
तुम अपने फिंगर्स को ध्यान से देखना, तुमने अपने थंब को वाई एक्सिस की तरफ रखा है। फिंगर कर्लिंग इज बेसिकली in such a way that thumb is looking like it is perpendicular to the curling dimension, right? इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो सर्कल बना है, it is basically in a plane such that y is perpendicular to that plane. So this is in xz plane. Similarly, अगर तुम्हारा वायर z axis की तरफ होता and at any distance r, if you want to draw the fill line structure, then you will do what? You will draw a circle of radius r, and that circle will be in which plane? It will be in yx plane, that is xy plane. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे। सो दिस कर्लिंग वाज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सो हियर टेंजेंट यू ड्रॉ in such a way that it is towards the anti-clockwise sense, so it is in this direction. Similarly, यहाँ पे निकालना है, you will draw the tangent here, magnetic field in this direction, here in this direction. Likewise you can do. Now let us talk about the question. So यहाँ पे देखो हमारे पास वायर है at this position, right? And we have to calculate B dot dl, integral of B dot dl from A to B. So let us talk about magnetic field at any point on this length. So let's say I'm talking about this point. So इस point पे magnetic field का direction क्या होगा, क्योंकि हमें B dot dl निकालना है, ठीक है? So we need the direction of magnetic field, we need dl, and we need to see what is angle between them, right? So first of all, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से ऐसे आर रेडियस पहले दिखाओ, क्योंकि देखो जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना था, व्हाट वी डिड, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल व्हिच इज सेंटर्ड बेसिकली ऑन द वायर, राइट? सो यहाँ पे वायर पोजीशन क्या है, ये। सो आई एम टेकिंग दिस एज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, and then you will draw a circle passing through this dot point, right, in order to calculate or see for the direction of magnetic field. So मैं complete circle नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे arc बना रही हूँ। Done है? And magnetic field here, this is inward current flowing, right? So magnetic field, because of this will be in which sense? It will be in clockwise direction, ठीक है? So यहाँ पे देखो magnetic field कुछ ऐसे हुआ। Let's say this is along n cap. So B का direction n cap मैंने बोला, what will be dl? So यहाँ से इसको आप ले लो y axis, इसको ले लो आप x axis. So basically this AB length is such a way, is placed in such a way that at each of its point x coordinate is constant. X coordinate क्या होगा? A होगा. Y coordinate is changing. Let's say this AB is along y axis, right? So I am taking this small length dl as dy. Okay, because this is placed along the y axis, so I am taking like this, nothing more. So this is dy. Okay, अब आप ध्यान से चेक करो, this is your let's say this is your theta, this is your theta. So I mean, how we can relate with this thing theta and n cap? So n cap को आप कैसे लिख सकते हो? N cap will have two directions, right? One along the x axis and another along the negative direction of y axis. So this n cap has two direction. अब n cap को मैं break कर रही हूँ यहाँ पे. It can be written as what? If this is theta, which angle will be theta over here? Theta is angle between r and horizontal. This is perpendicular to r and this is vertical. So this will be theta, because if angle between two line is theta, angle between their perpendiculars is also theta. So ये हो गया तुम्हारा theta. Okay? अब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलने वाला है? माइनस ऑफ cos थीटा y कैप, डन है, प्लस sin थीटा x कैप. अभी भी आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, you will be getting 1, right? That is the property of unit vector. So this is n cap with proper direction. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन वी हैव गॉट, मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 pi r, where r is this one. Okay, so let's say we have taken this element at a height of y. So this is r will be equal to how much? It will be equal to a square plus y square का root under. So this is this. Okay, now this is dy. अब आप b dot dl करके चेक करो क्या होगा for this particular element. So b is how much? B is mu naught I by 2 pi r, and I mean b का डायरेक्शन वेक्टर आप लिख लो, माइनस कॉस थीटा y कैप प्लस साइन थीटा x कैप, ठीक है, and dot this is your dy. Okay, so dot this is dy,
Done it? Along the y-axis we have taken it. So this is your basically y cap, dy y cap. Because this element dy is along the y-axis, so I have taken it like this. Now if you take its dot product, how much value you will be getting? Mu naught I by 2 pi r, and I mean x cap dot y cap 0 हो जाएगा, y cap dot y cap 1 होगा. So this will be basically minus sign cos theta dy. Okay, so this is what we are going to get. Now we are having, this is your small b dot dl, right? So this is b dot dl का एक small सा value, delta कह सकते हो. Okay, so this thing we have got. Now we need to put the value of r, we need to put the value of theta, so that we can have just one variable. Let us write everything in terms of y. That also we can do. ठीक है, depends on your mathematics, in how many different ways you can do it, but I will go that way. Okay, so mu naught I by 2 pi, r का वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ? A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर. एंड cos थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो यहाँ से cos थीटा तुम्हारा क्या होगा? This will be a by r. So a divided by r. One more r, it means इसका आप स्क्वायर ही कर दो. So रूट को हटा लो. This is your r square basically. ठीक है? So one r this one and one r of cos theta, that is a by r. Okay, and this is your dy. So how much? I mean, we have to integrate it, right? So integration sign के अंदर चलो ले लेते हैं. And this will be how much? Mu naught I by 2 pi. Whatever is constant, I will take that outside. So mu naught I a by 2 pi. Mu naught I a by 2 pi. I'm taking this out. Okay. Mu naught I a by 2 pi dy by a square plus dy by a square plus y square. And limit will vary from where to where. जैसे क्वेश्चन में चले जाओ a से b. So a to b, if we have to do this integration, then we will be putting minus a to, sorry, minus a to plus a. क्योंकि a meaning, जैसे हमने इसे x axis माना, इसको origin लिया है. So this point will have a coordinate of what? X will be a, y will be minus a, and here it will be a and a. So y is varying from minus a to a. So that is why here we will do, because y के respect में we are integrating, right? So minus a to a. Now you just need to integrate it in order to reach to the answer. अब आप reach कर जाओगे, देखो जल्दी से. So I mean this is a very simple integration. Y को आप क्या लिख सकते हो? A tan theta. जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज्यादा आइडिया होगा, देखते ही समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा. बट दोज हु आर नीट स्टूडेंट्स, उनको भी मैं कहूंगी जनरल मैथमेटिक्स आप लोग भी पढ़े होंगे. सो इफ यू आर नॉट एबल टू सी इन द फर्स्ट गो, इट मीन्स यू आर नॉट इन प्रैक्टिस. दैट इज सिंपल. ठीक है, क्योंकि देखो हमारी मिस्टेक होती है दैट वी शुड ट्राई टू रियलाइज. अगर तुम्हें लग रहा है ये कहाँ से आ गया, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यू आर नॉट इन प्रैक्टिस. डन है? दिस इज वेरी सिंपल वन, आई वुड से वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. सो हमने y को a tan theta लिया. Now do the partial differentiation. dy will be a sec square theta d theta. Now let us put the things. पहले मैं इसको निकाल देती हूँ यहाँ से. So dy को आप क्या लिखोगे? dy को लिखोगे a sec square theta, and this is d theta divided by a square plus y square. A square plus a square tan square theta, right? So a square को common लोगे आप. डन है. what you will be left with 1 by a sec square theta d theta, and this is equal to how much? 1 plus tan square theta क्या होता है? sec square theta. It will get cancelled. So you are left with d theta by a. So here you will write minus mu naught I a by 2 pi into 1 by a integration of d theta. Okay, and that will give you how much? Theta. So minus mu naught I a, सॉरी ए तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई थीटा. एंड थीटा का वैल्यू आप क्या पुट करोगे? थीटा आया है हमें. लिमिट पुट करने से पहले थीटा को यहाँ से लिख लो. tan थीटा को आपने क्या लिया है? y बाई ए. सो थीटा विल बी हाउ मच? tan इनवर्स y बाई ए. सो लेट अस पुट इट हियर. सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई with minus sign tan inverse y by a, and y will vary from minus a to a. If you put the limit, I mean a अगर आप रखते हो तो tan inverse 1 किसके बराबर होता है? 45 डिग्री. डन है. एंड दैट इज पाई बाई 4, एंड tan inverse minus 1 minus pi by 4, so that will become minus pi by 4. So pi by 4 minus pi by 4 basically आएगा लिमिट के अंदर. So you will be getting pi by 2. So minus of mu naught I by 2 pi into this is pi by 2.
सो आंसर विल बी हाउ मच, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4. सो आंसर तुम्हारा क्या है, बी डॉट डी एल का वैल्यू फ्रॉम ए टू बी इज माइनस म्यू नॉट आई बाई 4. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. Am I correct? Yes. So this is not at all dependent on A factor. So if we are going to change that A thing by changing proportionately changing the length also, that will not put any influence on this calculation. लेकिन अगर आपने यहाँ पे A को change किया 2A किया और इसको same रहने दिया, then change हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि you have reached to this calculation only because there was this was half, this was half divided along this line. This was symmetrically divided along this line. अगर वो symmetry disturb होता है, इवन इन मैग्नीट्यूड वाइज सिमेट्री तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा. देखो अगर इसको हमने 2a भी किया और इसको a एंड a किया, सिमेट्री नहीं डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन प्रोपोर्शन में डिस्टर्बेंस हुआ है. जैसे कि a था, ये भी a था, दिस वाज a, दिस वाज a, देन वी हैव गॉट दैट आंसर. ऐसे भी आप चेक कर सकते हो. देखो जैसे ये 2 है, 2a कर दिया हमने इसको और इसको a ही रखा, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये वाला टर्म जो तुम्हारा है ना, दिस विल बिकम 4a स्क्वायर. और जब आप लिमिट रखोगे ना तो a से a ही बचेगा, राइट, माइनस a टू a ही बचेगा. सो बेसिकली y बाई 2a होगा यहाँ पे, राइट. एंड जब ये करोगे तो tan इनवर्स हाफ आएगा, सो इट आंसर वोंट बी सेम, राइट. सो या कैलकुलेशन के थ्रू जाकर भी आप इजिली आंसर कर सकते हो सेकेंड पार्ट को, सो चेंज नहीं आएगा. I hope you have got this question, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.